Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture. And the topic for today's lecture is clothes. And what all we'll be studying: kinds of clothes, types of fibers, special clothes, different types of dresses, and clothing habits. We'll be covering these all the topics in the chapter. Before starting the chapter, we'll be doing a very small activity. Name three clothes that we wear in summer and we wear in winter. हमें ऐसे तीन क्लोथ्स का नाम बताना है जो हम समर में पहनते हैं और विंटर में पहनते हैं. What all we wear in summer? We wear t-shirts, we wear shorts, and girls wear skirts. These are the three clothes that we wear in summer. You can write any other clothes that you wear in the summer. These are just the examples that I have given to you. Now we have to write three clothes that we wear in the winter. In winter, we wear warm clothes. For example, we wear sweater, jacket, we wear gloves. These are the things that we wear in the winter. So let's start with the chapter. Clothes are the items we wear to cover our body. Clothes क्या होती हैं? वो items जो हम पहनते हैं अपनी body को cover करने. Clothes protect ourselves from heat, cold, rain, wind, sun and insect bites. Clothes हमें किससे protect करते हैं? Heat से, cold से, rain से, wind से, sun से and insect bites. Clean and iron make clothes makes us look smart. When we wear clean and iron means properly pressed clothes, then we look very smart. We wear different kinds of clothes depending upon the season, place we live in and the work we do. हम अलग अलग तरीके के clothes पहनते हैं depending upon the place where we live, depending upon the season and depending upon the work we do. Now kinds of clothes. We wear different types of clothes in different seasons. हम हर season में अलग अलग season में अलग अलग तरीके के. सबसे पहले cotton clothes. We wear light colored cotton clothes in summer. यानी कि cotton clothes हम कब पहनते हैं? समर में पहनते हैं. एकदम लाइट और जो हल्के से अच्छे से कलर्स के कपड़े होते हैं वो हम कब कॉटन के क्लोथ्स कब पहनते हैं? समर में पहनते हैं. They allow air to pass through and keep our body cool. ये क्लोथ्स कैसे होते हैं? ये एयर को पास होने देते हैं फ्रॉम आवर बॉडी टू द आउटसाइड वर्ल्ड और हमारी बॉडी को कैसा रखते हैं? एकदम कूल यानी कि ठंडा. They absorb the sweat easily. ये पसीने को एकदम easily absorb कर लेते हैं. Cotton comes from the cotton plant. Cotton हमें कहाँ से मिलती है बेटा? Cotton plant से मिलती है. And these, with the help of these pictures, we can see that all these are the type of cotton clothes that we wear in the summer season because they keep our body very cool and they absorb our sweat easily. This is a short. These are the shorts, skirts, t-shirt, frocks. So these are the types of cotton clothes. Now, from where do we get cotton? We get it from the cotton plant. Now, how from cotton plant we are getting cotton and then we are making the cotton clothes? We'll be studying with the help of this diagram. See, this is a cotton plant on which we can see there are small cotton buds. Then these cotton buds are then converted into threads. यानी कि धागे में convert करी जाती है ये cotton जो cotton plant पे लगी हुई है. And now with the help of these threads, the cotton dresses are made. So this is a three-step process from which the cotton plant से हमने क्या बना लिया? Cotton की dress बना. Next, woolen clothes. We wear woolen clothes in winter. यानी कि woolen clothes को हम कब पहनते हैं? Winter में पहनते हैं, ठंड में पहनते हैं. They keep us warm and protect us from the cold. ये हमें warm गर्म रखते हैं और हमें ठंड से बचा के रखते हैं. Wool comes from the fleece or hair on the body of. अब वूल कहाँ से मिलती है हमें? फ्लीस से या फिर जो शीप की बॉडी पे हेयर्स होते हैं वूल हमें वहां से मिलती है. See, these are some pictures of the woolen clothes. This is a coat, gloves and sweater. And now from where will we are getting wool? हम इस पिक्चर से देखेंगे. First is the sheep shearing. यानी कि शीप को पकड़ा जा रहा है और शीप के ऊपर की जो स्किन होती है यानी कि ऊपर हमने लिखा कि हमें वूल मिलती है फ्लीस से और या फिर हेयर से जो
शीप की बॉडी पे होते हैं। व्हाट इज द इन द पिक्चर इट इज शोइंग दैट we are removing the upper layer, we are removing all the hairs from the body of the sheep so that we can get wool from it. And by doing this हम सबसे पहले इसमें से क्या निकालते हैं, वूल निकाल लेते हैं। इस शीप के जो हेयर्स होते हैं इनसे हम वूल बनाते हैं, एंड वूल से हम क्या बनाते हैं, वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। दिस इज द प्रोसेस हाउ वी आर मेकिंग दी वुलन क्लोथ्स। Point to remember, yak, camel and rabbit hair are also used to make wool. sheep के अलावा और किस किस स्किन यानी कि और किसके हेयर से हम वूल बनाते हैं, yak, camel and rabbit. We also use their hairs to make the wool. Next is silk clothes. We also will wear silk clothes in winter. हम सिल्क के क्लोथ्स कब पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं। एंड सिल्क क्लोथ्स आर शाइनी इन अपीयरेंस। सिल्क के क्लोथ्स कैसे होते हैं बेटा, अपीयरेंस मतलब देखने में कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। We get silk from the silkworm. It lives on the mulberry leaves and spins very thin silk fiber to make a cocoon. अब हमने कहा कि हमें सिल्क क्लोथ्स मिलते हैं सिल्क वॉर्म से। Who gives us silk clothes? Silkworm. अब सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे बनाई जाती है, सिल्क क्लोथ्स कैसे बनाए जाते हैं, we'll be studying with the help of this diagram. See, silk lives on the mulberry leaves and spins very thin silk fiber to make a cocoon. कहाँ पे रहता है सिल्क वॉर्म, मलबरी लीव्स पे रहता है। और हम क्या करते हैं, सिंस वेरी थिन सिल्क फाइबर टू मेक अ कुकून, बहुत पतले से रेशे से धागे से क्या बनाता है, एक कुकून बनाता है। कुकून इज लाइक अ स्मॉल कवरिंग एंड द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दीज कुकून्स। और उसके बाद हम उस कुकून से एक एक धागे को अलग करके उससे सिल्क बनाते हैं और सिल्क सिल्क क्लोथ्स बनाते हैं। सी इन द डायग्राम, दिस इज अ सिल्क वॉर्म। ये जो व्हाइट कलर का हम देख रहे हैं ये सिल्क वॉर्म है, और ये लीफ कौन सी है, मलबरी लीफ है, हमने अभी ऊपर पढ़ा। हम इससे क्या करते हैं, ये छोटे छोटे एक एक धागे को, एक एक सिल्क फाइबर को बुनता है और क्या बना लेता है, एक कुकून बना लेते हैं। सी, कुकून इज लाइक अ स्मॉल कवरिंग, एक छोटा सा ऐसे गोल सा कवर होता है, और कुकून से क्या बनाया जाता है, सिल्क फाइबर। हमने यहाँ लिखा द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम दीज कुकून्स। कुकून से एक एक धागे को निकाल के हम सिल्क फाइबर बनाते हैं, और सिल्क फाइबर से हम सिल्क के क्लोथ्स बनाते हैं। एंड इन द पिक्चर ऑल्सो वी कैन सी दैट सिल्क क्लोथ्स आर वेरी शाइनी इन appearance. So this is the process by which silk clothes are made from the silk। और सिल्क को हमने किससे लिया है, सिल्क वॉर्म से, जो मलबरी लीव्स पे बैठा है, एंड देन उससे कुकून बना, कुकून से सिल्क फाइबर बना, और सिल्क फाइबर से सिल्क के क्लोथ्स बने। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क क्लोथ्स। नेक्स्ट इज लेदर। The skin of some animals like snake, buffaloes and camels are used to make clothes made up of leather। कुछ एनिमल्स की जो स्किन होती है बेटा, जैसे स्नेक की, बफेलो एंड कैमल्स की जो स्किन होती है, वो हम यूज करते हैं कुछ लेदर के क्लोथ्स बनाने। एंड लेदर ऑल्सो कीप्स अस वार्म। लेदर के क्लोथ्स भी हमें कैसे रखते हैं, वार्म रखते हैं। इन द पिक्चर वी कैन सी what all types of clothes we are making with the help of the animal skin, that is belt, shoes, leather gloves and jacket. These all are the leather clothes or leather items that we are making with the help of the skin of some animals like snakes, buffaloes and camels। And all these things keep us warm, यानी कि ये हमें गर्म रखते हैं। Next is rubber. We use raincoats, gum boots and umbrellas in the rainy season। हम रेनकोट यूज करते हैं, गम बूट्स यूज करते हैं और अम्ब्रेला यूज करते हैं रेनी सीजन में। They protect us from the rain। ये हमें रेन से प्रोटेक्टेड रखते हैं। And these things are usually made up of plastic or rubber as they are waterproof। Umbrella कैसा होता है, waterproof होता है। Gum boots they are again waterproof। Raincoats are again waterproof। तो ये सारी चीजें किससे बनी हुई हैं, या तो प्लास्टिक से या रबर से बनी होती है, बिकॉज दे आर वाटरप्रूफ इन नेचर। वाटरप्रूफ का मतलब होता है कि इनसे पानी अंदर नहीं आता। जब हम रेनकोट पहनते हैं तो हम अंदर से गीले नहीं होते हैं। तो रेनकोट वाटर प्रूफ होता है और वो रबड़ या प्लास्टिक से बना हुआ है। इन द पिक्चर वी कैन सी दिस इज एन अम्ब्रेला।
gum boots and raincoat, and all these items are made with the help of rubber or with the help of a plastic. Next is types of fibers. Fibers that we get from plants and animals are called natural fibers. जो फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो कौन से फाइबर्स होते हैं? नेचुरल फाइबर्स. कॉटन, जूट, सिल्क, लिनन एंड वूल आर सम नेचुरल फाइबर्स. कौन कौन से फाइबर्स है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं? कॉटन, jute, silk, linen, and wool are some natural fibers because we are getting them naturally from the animals and plants. Fibers that are man-made are called synthetic or artificial. जो फाइबर्स हम मैन मेड यानी कि जो मैन वी पीपल मेक the fibers, that is the man made the fibers, that is known as a man made fiber or a synthetic fiber. An example is nylon, polyester and rayon are some synthetic fibers. Example of a artificial fiber is nylon, polyester and rayon. They are all the examples of synthetic fibers, or you can say man-made fibers, because we are not getting them naturally. Instead, we human beings are making them with the help of machines. Special clothes. Now, there are some special clothes that we wear in our life depending upon the work we are doing and depending on the place where we are living, and also depending upon the festival that we are celebrating. The first is the uniform. People who are in special jobs wear special kinds of clothes. जो अलग अलग स्पेशल जॉब्स में होते हैं बेटा वो स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं, एंड दीज क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म. और वो स्पेशल क्लोथ्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं. We can know about the profession of the person by the uniform he she wears. हम किसी की यूनिफॉर्म देख के ये समझ जाते हैं कि वो क्या काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने व्हाइट कोट पहना है हम कहते हैं दैट ही इज अ डॉक्टर. किसी ने ब्राउन कलर की यूनिफॉर्म पहनी है तो वी से दैट ही इज अ पुलिसमैन. So we can know about the profession of the person by the clothes or the uniform that he she wears. Profession का मतलब वो क्या काम करते हैं वो हम पहचान लेते हैं इससे उनकी यूनिफॉर्म से जो उन्होंने पहनी हुई है. चिल्ड्रन ऑल्सो वेयर यूनिफॉर्म्स व्हेन दे गो टू स्कूल. जब हम स्कूल जाते हैं तो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ आवर यूनिफॉर्म एवरीबडी कम्स टू नो कि हम स्कूल जा रहे हैं. हमारी यूनिफॉर्म से हमारे बारे में पता चल जाता है. Now these are some pictures. Policeman. As I told you, he wears brown uniform with the proper cap and belt and a gun. Postman also wears a brown uniform. Doctor wears a white coat and student wears a school uniform. Next is costumes. A particular type of dress is called a costume. एक particular type की जो dress होती है वो क्या कहलाई जाती है? कॉस्ट्यूम कहलाई जाती है. और कॉस्ट्यूम क्या होती है? जो हम एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पहन रहे हैं या पर्टिकुलर चीज के लिए पहन रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन द पिक्चर दिस इज अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो हम कब पहनते हैं? व्हेन वी गो फॉर स्विमिंग. दिस इज अ ड्रामा कॉस्ट्यूम जब हम किसी ड्रामा एक्ट के लिए जाते हैं. दिस इज अ ड्रामा कॉस्ट्यूम and this is a dance costume. When an entire group performs एक डांस परफॉर्मेंस देता है बहुत सारे लोग एक साथ, we can see that all of them are wearing the same uniform because they are going to perform the same dance in a group. So this is a dance costume. Next is different kinds of dresses. People living in different parts of the country also wear different kinds of dress. जो लोग देश के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं वो भी अलग अलग तरीके की यूनिफॉर्म पहनते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कश्मीरी कपल wearing a long kurtas and wearing these kinds of clothes on the head. This is a Maharashtrian couple wearing a Maharashtrian sari. This is a Punjabi couple. We can see they are wearing dhoti and the turban on the head. The Rajasthani couple wearing a Rajasthani sari and Rajasthani जी. तो हमने बोला कि लोग देश के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं and we wear different kinds of uniform different kinds of dresses when we live in the different places of the world. We can see Kashmiri people wear Kashmiri clothes, Maharashtrian people wear Maharashtrian clothes, Punjabi people are wearing Punjabi dresses, and the Rajasthani people are wearing the Rajasthani dresses.
We wear special clothes on festivals, weddings and birthday parties. It is for sure कि हम festivals पे अच्छे special clothes पहनते हैं, weddings पे special clothes पहनते हैं, birthday parties पे भी special clothes भी हम पहनते हैं. Like लहंगास, शेरवानी, सलवार कमीज एंड सूट्स. क्या पहनते हैं बेटा हम वेडिंग्स पे? लहंगा, शेरवानी, सलवार कमीज एंड सूट्स. So these are all the types of special clothes that we wear on the festivals and weddings. Now see, these are some pictures. Wedding dress. The girl is wearing a gown. Birthday party dress. The boy is wearing a smart shirt and a smart trouser. And festival pe we wear lehengas and kurtas. So these are some of the special clothes that we wear on special occasions. Next is clothing habit. We should take proper care of our clothes. हमें हमारे clothes की एकदम अच्छे से care करनी. We should always wear clean and well ironed clothes. हमें हमेशा साफ और एकदम iron clothes पहनने चाहिए. Why? Because if we wear clean and iron clothes, then we look smart. We should keep our clothes at their proper places. हमें अपने clothes को एकदम सही जगह पे तरीके से रखना चाहिए. Now some points to remember. Clothes are the items we wear to cover our body. Clothes क्या है? कुछ items हैं जो हम पहनते हैं अपनी body को cover करने के लिए. Clean and iron clothes makes us look smart. अभी हमने ऊपर पढ़ा था that when we wear clean and iron clothes, then we look smart. Cotton clothes allows air to pass through and keep our body cool. Cotton clothes क्या करते हैं? Body से air को pass होने देते हैं और हमारी body को एकदम cool रखते हैं. Why? Because they absorb our sweat very easily. We wear woolen clothes in winters. हम woolen clothes कब पहनते हैं? Winter में. Why? Because they keep us warm. Skin of some animals is also used to make clothes made up of leather. कुछ animals की skin का यूज किया जाता है. क्यों? To make clothes जो कि किससे बने होते हैं? Leather से बने. Nylon, polyester and rayon are some synthetic fibers. Synthetic fibers क्या होते हैं? Man-made fibers होते हैं that are not, made. They are not naturally made. Instead, man makes them. So example of synthetic fibers is nylon, polyester and rayon. And people who are in special jobs wear uniform. जो special job करते हैं वो क्या पहनते हैं? Uniform पहनते हैं. I hope you people have understood the chapter, and now it's the time to do some exercises. Pick the correct option. We get silk from sheep, trees या silkworm. हमें silk किससे मिलती है बेटा? Silkworm से मिलती है. Pick. It's a synthetic fiber. Synthetic fiber कौन से हैं? जो man made है, यानी कि we are not getting them from plants and animals. तो कौन सा है? Nylon, silk या wool? Silk और wool तो हमें animal से मिलते हैं. So nylon is the synthetic fiber that we get from that man made. Raincoats are mostly made up of silk, rubber या cotton. Raincoat किससे बना होता है? रबर से बना होता है. Why? Because it is a waterproof item. So raincoat is made up of rubber. We wear these clothes during summer. हम summer में कैसे clothes पहनते हैं? Woolen, cotton या silk. हम summer में एकदम cotton clothes पहनते हैं because to keep our body cool. We wear cotton clothes in summer. Choose the correct word to fill in the blank. We wear clothes to dash our body. हम clothes क्यों पहनते हैं? अपनी body को cover करने के लिए. So we wear clothes to cover our body. Woolen clothes keeps us dash and protects us from cold. Woolen clothes हमें कैसे रखते हैं? एकदम warm रखते हैं और हमारी body को ठंड से protect करते हैं. We wear warm clothes. We wear a dash to go to school. हम जब स्कूल जाते हैं तो क्या पहनते हैं बेटा? फॉर्म पहनते हैं. सो वी वियर अ यूनिफॉर्म टू गो टू स्कूल. वी वियर डैश क्लोथ्स ऑन फेस्टिवल्स, वेडिंग्स एंड बर्थडे पार्टीज. हम वेडिंग्स पे, फेस्टिवल्स पे, बर्थडे पार्टीज पे, बिकॉज दीज आर दी स्पेशल ओकेजन्स, यानी कि हमारे लिए स्पेशल दिन होते हैं. तो स्पेशल दिन पे कैसे यूनिफॉर्म कैसे क्लोथ्स पहनेंगे? स्पेशल क्लोथ्स पहनेंगे. वी वियर स्पेशल क्लोथ्स ऑन
weddings and birthday parties. Dash clothes absorb sweat easily. कौन से क्लोथ्स होते हैं जो स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं? कॉटन क्लोथ्स। और हम उन्हें कब पहनते हैं? समर में पहनते हैं। वाई? बिकॉज दे कीप अस कोल्ड कूल। Pick the true and cross the false state. You should always wear clean and well ironed clothes. हमें हमेशा से clean और well ironed clothes पहनने चाहिए. True. क्यों? क्योंकि हम स्मार्ट लगते हैं. We wear same type of clothes throughout the year. हम पूरे ईयर सेम तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं? नो, क्योंकि हम डिफरेंट सीजन के हिसाब से, डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से अलग अलग क्लोथ्स। People living in different countries wear same type of clothes. There are so many people living in the different countries, living in the different areas of the country. सब लोग सेम क्लोथ्स पहनते हैं? तो हमने ऊपर पढ़ा था चैप्टर में that Maharashtrian people wear Maharashtrian dresses, Rajasthani people wear different dresses, Kashmiri people wear different dresses. So people living in different countries wear same type of clothes? No, they wear different type of clothes. सिल्क क्लोथ्स आर शाइनी इन अपीयरेंस। सिल्क के क्लोथ्स देखने में बहुत ज्यादा शाइनी और सुंदर होते हैं। यस, हमने अभी ऊपर देखा भी था यूनिट में दैट सिल्क क्लोथ्स, फॉर पिक्चर में वी हैव सीन दैट सिल्क क्लोथ्स आर वेरी शाइनी इन अपीयरेंस, और वो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। नाउ दीज आर सम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the chapter. Thank you so much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you.